हेलो माय डियर फ्रेंड्स आइए हम idioms और phrases को सॉल्व करना कंटिन्यू रखें। सो लेट्स स्टार्ट। पहला idiom है गिव वे। गिव वे एक्चुअली का मतलब होता है स्नैप, SNAP, स्नैप या ब्रेक। कोई चीज जो अचानक टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, दैट इज स्नैप, SNAP, स्नैप। उसके लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रोप दैट द क्लाइंबर वॉज यूजिंग gave way all of a sudden. So hope give way आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्लियर द एयर। Clear the air means to improve a difficult or uncomfortable situation by talking honestly about worries and doubt and so on and so forth. यानी जब हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में या एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में अच्छी बातें करके, ईमानदारी से प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करके, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बातें करके उस डिफिकल्ट सिचुएशन या कंडीशन को हम इंप्रूव करना चाहते हैं, उस केस में हम इस इडियम का यूज करते हैं। दैट इज व्हाट क्लियर द एयर। फॉर एग्जाम्पल, द एटमोस्फियर in my house that day was very tense and I was trying my level best to clear the air by talking honestly about all the complications and problems the human life is subject to. Next, come up. Come up, produce. Like, some of my friends are always ready to come up with lots of solutions or lots of just pieces of advice. Next, chew the scenery. Chew the scenery to act overly emotional or ओवर एक्ट, यानी कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करने लगना। उतनी ओवर एक्टिंग जितनी एक्चुअली डाइजेस्ट ना हो पाए। दैट इज चू द सीनरी। फॉर एग्जाम्पल, दैट एक्टर इन दैट मूवी वॉज सीन chewing the scenery. Next, out for the count. Out for the count, unconscious। एक ऐसी हमारे जो है शरीर की कंडीशन जिसमें हमें कुछ महसूस ना हो, यानी बेहोश हो जाने वाली कंडीशन, या जो बहुत ही गहरी नींद में कोई व्यक्ति हो, तो उसके लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं। क्या? out for the count. Like, for example, my neighbor gets out for the count after drinking good amount of alcohol every night. Next, change of heart. Change of heart means change of one's own mind, change of one's own opinion, change of one's own attitude. किसी का अचानक दिमाग बदल जाए, उसके विचार बदल जाए, उसकी चॉइस बदल जाए, उस बदलाव के लिए चेंज ऑफ हार्ट। सो आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम because he can have his change of heart any day, any moment,
without any warning. Next, to lead one by the nose. To lead one by the nose, to have complete control over someone and make that person do what one pleases. यानी किसी व्यक्ति को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लेना और उससे जो मर्जी चाहे वो करवाना. To lead someone by the nose. And there are certain politicians of our country who are capable enough to lead people by their nose. Next, to foot the bill. To foot the bill, to pay the bill, to pay certain amount of money. That is actually the bill. So, I try my best to foot the electricity bill every month. Next, shooting fish in a barrel. Shooting fish in a barrel, something that is very easy to do or very easy to do something. कोई चीज जो बहुत ही आसान हो, उस काम को करने के लिए shooting fish in a barrel. For example, resolving problems of mathematics is like shooting fish in a barrel for my friend. Next, to walk the tightrope. To walk the tightrope, to be very cautious, very careful, and on high alert in a kind of a difficult situation or in a kind of a complicated situation. यानी किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में जब बहुत ही सामने वाला केयरफुल होता है, सामने वाला बहुत ही सावधान होता है, in that case that person is walking the tightrope. Next, feather in one's cap. Feather in one's cap, some distinction or some honor that is added to somebody's personality. यानी कि कोई विशेष डिस्टिंक्शन, योग्यता या अचीवमेंट, that is feather in one's cap. For example, if you are going to crack this competition, you are going to add a feather in your cap. Stealing the thunder means preventing someone to get that praise or honor or credit or attention by saying something that person actually wants to say for getting the attention, credit or praise. यानी कि कोई बात कोई व्यक्ति कहना चाहता हो, कोई सरप्राइजिंग न्यूज कोई व्यक्ति बताना चाहता हो और वो सरप्राइजिंग न्यूज आप बता देते हो और ऐसा करके क्या कर लेते, उस व्यक्ति को रोक देते उस प्रेज, उस तारीफ को पाने के लिए, उस अटेंशन को पाने के लिए जो वो पाता अगर जो वो बात खुद बताता जो आप बता देते हैं. दैट इज स्टीलिंग द थंडर. फॉर एग्जाम्पल, actually I was delivering a speech and in the midway I forgot something. One of my colleague came forward and let the people know about that fact that I forgot, and by doing that he stole the thunder. So stealing the thunder, to say something or do something in order to prevent someone from getting the attention, praise or honor. Next, my dear friends,
Have a whale of a time means to enjoy oneself or yourself a lot. जब हम खूब अपने आप के खूब एंजॉय करते, that is we have a whale. We have a whale of a time means we have a lot of just fun and enjoyment to enjoy ourselves. So let's have a whale of time. Chase rainbows. Chase rainbows, to do, try to do something that is almost impossible to do, or try to achieve something that is almost impossible to achieve. If is planning, for example, मैं बता उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं मैं आपको. For example, if is trying to set up that factory within 15 days, it means he's trying to chase rainbows. Foam at the mouth. Foam at the mouth, to be extremely angry. बहुत अधिक गुस्सा हो जाना. Foaming at the mouth. When I saw that stranger doing a lot with my books, I began foaming at the mouth. Next, back on one's feet. Back on one's feet, returning to health. Returning to that position that one had somehow lost. जैसे किसी की सेहत खराब हो जाए, बीमार हो जाए, और बीमार हो जाने के कारण उसकी सेहत खराब हो जाए, लेकिन जब वो फिर से ठीक होने लगे और अपनी सेहत को रिगेन करने लगे, इट मीन्स दैट पर्सन इज बैक ऑन हिज फीट. Ring a bell. Ring a bell, something that reminds someone about something, but not exactly, not in exact manner. यानी कि जब कोई चीज आप सुनते हैं और वो चीज कोई चीज आपको याद दिलाती है, लेकिन पूरी तरह से वो चीज आपको याद नहीं आ पाती है, that is ring a bell. For example, जब भी मैं उसका नाम सुनता हूं, मुझे अपने एक दोस्त की याद आती है जिसका मैं नाम याद exactly नहीं कर पाता हूं. For example, whenever I hear the name of that person, it rings a bell, but I end up failing in recollecting the name of that friend of mine I lost long back. Next, kick someone when they are down means किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना जब वो ट्रबल में हो, बैड टाइम में हो, या किसी और को बहुत ज्यादा टॉर्चर या और ज्यादा प्रॉब्लम देना जब वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में हो. तो kick someone when they are down, and we should avoid kicking a certain person who is already in trouble. Next, raise a dust. Raise a dust, cause a confusion or disruption or turmoil. Turmoil. So cause a confusion. Raise the dust, cause a confusion. And I'm just not going to raise the dust by creating certain problem. The ship has sailed. The ship has sailed. No possibility of return. No possibility of
getting that opportunity that is already past. यानी the ship has sailed, वो मौका जो हमने गंवा दिया है और जिसे वापस फिर नहीं पा सकते, उस केस में the ship has sailed. Like, I had a time to take admission in that college, but I missed it, and now the ship has sailed. यहां पे आप सिर्फ इतना चाहिए तो कर सकते हो। वैसे ये मैंने पूरे सेंटेंस को लिख दिया जो एग्जाम में पूछा गया। माई मदर इज इन, यहां पे ये है आपका इडियम, इन रैप्चर्स ओवर हर न्यू स्टोव। सो इन रैप्चर्स का मतलब होता है एक्सट्रीमली डिलाइटेड, बहुत ही ज्यादा खुश, एक्सट्रीमली हैप्पी। याद रखिएगा, RAPTURE, रैप्चर। RUPTURE दूसरा वर्ड है जिसको हम रप्चर कहते हैं, दैट जिसका मतलब होता है टू ब्रेक, टू बर्स्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सम ट्यूमर if not treated or not removed from the body at certain time or after certain time, it ruptures. So RUPTURE, rupture, that is burst. This is RAPTURE, in raptures, extreme delight, extreme happiness. No spring chicken, ironically, to let someone know that one is no longer young, who is claiming to be young. यानी कि जब हम किसी को ironically, जिस थोड़ा सा satirically उसको बताना चाहते हैं कि भैया अब आप यंग नहीं रहे, आप बूढ़े हो गए, that is no chicken, sorry, no spring chicken. So no spring chicken, no longer young, means old. Like for example, I tried to let my neighbor know that he was no spring chicken. Next, move the goal posts है, इसमें S लगा लीजिएगा, means to change the rules or requirement of a competition or a sport that is already in progress. यानी किसी स्पॉट, किसी खेल या किसी कंपटीशन, प्रतियोगिता के नियम को अचानक ही जब वो चल रही हो, शुरू हो गई हो, उसमें बदल देना, दैट इज मूव द गोल पोस्ट. एंड young children in the village, while playing certain game, they always try their level best to move the goal post. So my dear, यहां हमने पहले 23 idioms को कवर कर लिया, क्योंकि इसमें हम टोटल 46 idioms को कवर कर रहे हैं और हमने 23 idioms को कवर कर रखा. ये बचे हुए 23 और देखें. Go the extra miles to make some special effort to achieve something more. जब हम कुछ ज्यादा मेहनत करते हैं, कुछ ज्यादा काम करते हैं, कुछ ज्यादा हासिल करने के लिए, in that case we go the extra miles, and you have to go, or you have got to go extra miles to crack this competition. Next, beyond the shadow of a doubt means no doubt at all. And I'm going to help you beyond the shadow of a doubt, in all circumstances, in all conditions. Next, hold the fort. Hold the fort, to take the responsibility of someone or something for temporary period of time. किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेम्पररी यानी कि कुछ सर्टेन टाइम के लिए लेना, नॉट हमेशा के लिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल,
some of my friends were absent from the office. They were on the French leave. In that case, I decided to hold the fort. Next, to blaze the trail. To be the first one to do something, and by doing, trying to show the others how to do that. Like for example, when that woman pilot just went on her first flight, or went for flying the plane for the first time. By doing that, what? She blazed the trail. Blazed the trail to do something and show others how to do that. Example मैंने आपको बताया कि कोई मान लीजिए वुमेन पायलट जब पहली बार अपनी फ्लाइट को उड़ाती है और दूसरों को वो दिखाती है, दूसरी यंग विमेन को कि इसे कैसे करते हैं, दैट इज शी blazes the trail. Next, a bull in a china shop. A bull in a china shop, a person who makes a lot of mistakes, causes a lot of damage, breaks a lots of things. In that delicate situation and condition, when he or she is supposed to be very, very careful. Like for example, there are certain politicians who can be called the bulls in a china shop. Why? Because they make a lot of mistakes, and after making a lot of mistakes, they have to rectify their mistakes. So we shouldn't be a bull in the china shop. To bite someone's hand off means to be ready to do something. If someone says to do something, यानी जब हम हमेशा, या वो व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कोई भी काम उससे कहा जाए वो करने को तैयार हो, it means that person is ready to bite somebody's hand off. और यहां देखिए हैंड की जगह जो हेड हो जाए, यहां है to bite someone's hand off means to be ready to do something. हमेशा तैयार रहना, बहुत ही एक्साइटेड रहना किसी काम को करने के लिए, ये है इसका मतलब टू बाइट समवन्स हैंड. अगर हैंड की जगह हेड, HEAD, हेड आ जाए तो पूरी मीनिंग बदल जाएगी और मतलब हो जाएगा to lose temper at somebody all of a sudden. अचानक ही किसी के ऊपर गुस्सा हो जाना बिना किसी बात के, सामने वाले को समझी नहीं कि सामने वाला गुस्सा हुआ क्यों. उस केस में टू बाइट someone's head, HEAD, head off, and to bite someone's hand off, to be ready to do something for someone. To bite somebody's head off means to lose temper at someone all of a sudden. Next है an eye opener, something very, very shocking, that reveals something very shocking. कोई ऐसी घटना जो आपकी आंखों की पट्टी हटा दे, आपको सच्चाई की समझ करा दे, that is an eye opener. That accident that took place in front of me was an eye opener for me. Next, the last straw, the final event in a series of problems. In a series of problems that make someone lose one's temper and cause him to get upset.
यानी द लास्ट स्ट्रॉ, वो इवेंट, वो प्रॉब्लम, वो अंतिम प्रॉब्लम। किसी सीरीज में एक श्रृंखला में ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती, ढेर सारी समस्याएं आती, और जो अंतिम समस्या जो होती, जिसके कारण कोई व्यक्ति अपना अपना धैर्य खो देता और पूरी तरह से अपसेट हो जाता है, तो वो लास्ट जो प्रॉब्लम होती है, दैट इज द लास्ट स्ट्रॉ। दैट इज अ फ्लाई ऑन द वॉल मीन्स an unnoticed observer, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ ऑब्जर्व, कुछ देखना चाहता हो, लेकिन वो चाहता हो कि कोई उसे देखे नहीं। जैसे एक फ्लाई होती है वॉल पे और हम ये समझते हैं कि वो कुछ नहीं समझ रही, कुछ नहीं देख रही। ठीक वैसे ही कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है, छुपे हुए किसी व्यक्ति को देखना चाहता या उसे सुनना चाहता, और सुनना भी चाहता, देखना भी चाहता उस व्यक्ति को कुछ करते हुए, लेकिन वो चाहता कि वो व्यक्ति उसे जाने भी नहीं कि वो उसे देख रहा है। दैट इज अ फ्लाई ऑन द वॉल। नेक्स्ट, gear up for to be ready to do something, to be ready to perform. And now most of my friends are geared up for that long journey. They will begin, or they will go on the next, they will go on in the next month. Next, call upon, to order, to instruct. I called upon the waiter to bring me 2 cups of coffee, यानी मैंने वेटर को ऑर्डर करा कि वो 2 कप कॉफी लेके आए। सो कॉल अपॉन, टू ऑर्डर। नेक्स्ट है lose your touch. Lose your touch, to be incapable or not to be able to do something as well as before, यानी किसी काम को उतने अच्छे से न कर पाना जितने अच्छे से पहले कोई व्यक्ति कर पा रहा हो। उस केस में lose your touch or lose one's touch. For example, the way that batsman is batting, it is absolutely clear that he is losing his touch. At one's elbow, very close to that person or very near. At one's elbow का मतलब बहुत ही करीब, पास ही में। फॉर एग्जाम्पल, उसका सहयोगी हमेशा उसके पास होता है। His assistant is always at his elbow. Tell upon, affect something or someone adversely, किसी चीज के ऊपर किसी चीज का बुरा प्रभाव, उस बुरे प्रभाव को दिखाने के लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं। दैट इज टेल अपॉन। his smoking, his bad habit of smoking is telling upon his health, means affecting his health. Win laurels, to earn distinction, to earn honor, to earn reputation. सम्मान हासिल करना, योग्यता हासिल करना, कोई विशेष चीज हासिल करना, दैट इज win laurels. India brought home laurels after winning the World Cup in the year 1987. Sorry, 1975. Next, safe
pair of hands. That person whom you trust to do certain thing with great perfection, that person can be your safe pair of hands. यानी वो व्यक्ति जिस पे आप बहुत ही भरोसा करते हैं किसी काम को बहुत ही सही तरीके से करने के, that person be your safe pair of hands. Like for example, Ravindra Jadeja is a safe pair of hands because wherever he is fielding, he does not allow the ball to go. Next, let down, disappoint or fail, and we should not try to let down our youngsters. Next, go to the wall का मतलब होता है to fail, to collapse. कोई बिजनेस जो फेल कर जाए, पूरी तरह से असफल हो जाए, that is go to the wall. जिस तरह से उसका व्यापार चल रहा है ऐसा लगता है वो जल्द ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे the way his business is going, it is absolutely clear that very soon it will go to the wall. Next, knock down means demolish, D-E-M-O-L-I-S-H, demolish, या pull down, P-U-L-L-D-O-W-N, down, या raise, R-A-Z-E और R-A-G-E, probably R-A-Z-E, इनका मतलब होता है गिराना, किसी स्ट्रक्चर को, किसी ढांचे को तोड़ देना, गिरा देना, that is pull down, raise, knock down. Like the certain department of the government has decided to knock down all the illegal structures close to the highways. Next, a kick in the teeth, something that is very shocking, something that is very surprising is a kick in the teeth. His behavior in that party was a kick in the teeth. Wipe the floor with someone. Wipe the floor with someone means to easily defeat someone. किसी को बड़ी ही आसानी से हरा देना. For example, that team very easily wiped that team with, that team wiped that team the floor, or you can say this, just India wiped the floor with Sri Lanka. Next, pull the plug, stop the continuation of something or to discontinue something, किसी चीज को तुरंत रोक देना. Like for example, I'm just going to pull the plug on that business. Next, last but not the least, friends, at loggerheads. At loggerheads in great disagreement with, जब बहुत ज्यादा किसी के साथ मतभेद होना, at loggerheads. Like for example, I am at loggerheads with my neighbors. So my dear friends, I hope ये आपको 46 idioms absolutely clear हो गए होंगे. अगर जो आपको इसमें से किसी idiom की meaning को शायद की meaning में कुछ confusion हो, do let me know, dear friends. Thank you, friends.